A very good evening, all of you. Today we have a very unconventional topic to be covered, namely webinar on emerging career opportunities and demand for specialization in the future. We thought we will deviate from the regular topics as career options and give our students some information relating to the career options. Very good evening, all of you. Which are prevalent now and are likely to make inroads as our career options in times to come. So we have amongst Mr. Vaibhav Sharma and Mr. Vasan as our panelist for the webinar today. So let me just introduce you by letting you know about the profile of theirs. Mr. Vaibhav Sharma is associated with UPES, Dehradun. He's a career coach and has guided and groomed many students on various upcoming and offbeat career options in the last so many years. With more than 10 years of experience in educational corporate world, he has served many industrial giants like the Times of India Group, the Z Media Network. He holds a professional degree in Masters in Business Administration and has an honors degree in economics from the very reputed Delhi University. On the other side, we have Mr. Sumit Vasan, who himself has more than 12 years of enriched experience in the education domain, and he's currently associated with which is a full form for University of Petroleum and Energy Studies, Dehradun. He has been working constantly, guiding and mentoring students for the numerous opportunities available uh, after they finish their school education and with the industry aligned courses. He's helping them to choose the right stream, or you may say the vertical of graduation according to their interest and area of expertise. May I now hand you over to our eminent panelist and our speakers for the day, Mr. Vaibhav Sharma and Mr. Sumit Vasan. Please, sir. Yeah, thank you so much, Ms. Mahajan, for your kind words. And without further ado, let me share my screen and we'll start with the presentation. This presentation will be all about, offbeat career options, which are available for, senior classes. I request, first of all, let me ask you, am I audible to all? Yes, yes, Vaibhav, you are audible. You are. Can you all see my presentation? Yes. Yes. Okay, great. So I request, let's have this presentation interactive. I'll be here with you for next 90 minutes. And from, around 75 minutes, we'll be discussing about offbeat career options. I'll be discussing a lot of case studies and examples, real life examples. And I'll discuss which is new for you. I mean, I'll try to keep this session bilingual so that, we can interact thoroughly. And this session, is about offbeat career options which are available. See, when we talk about emerging career options, at times we get a sense of doubt, like if the career options are emerging, if they are new, so maybe there is no proven track record with the career options. But I'll be talking about those career options which are not new but are less aware. So let me help you with this. And I request if I can switch off my video so that we can have no more technical glitch or network congestion, because it's raining in Delhi. And we'll Yes, start with Vaibhav, the yes. presentation. Please, Right, thank you. please go Thank ahead. you. Yeah, right. Okay, again, so my name is Vaibhav Sharma. I'm your career coach, and we'll be starting with the presentation. So to all the panelists, I request just be handy with your chat box. I'll be asking a few questions and you have to answer them. And let's make this session interactive. Corona has disrupted world's economy. This is something which we are hearing every time, even in newspapers, on our television channels, and even in the daily discussions. So the question, the first question to the people,
what do you mean by word disruption? Please use your chat box and start writing. I mean, whether it is a positive word or a negative word. Please type your inputs, park your queries in the chat box. We have stipulated time frame for your question and answer. So last 15 minutes are dedicated for your question and answers. We'll be discussing about various career options in 75 minutes. And in the last, we'll take your questions. So I'm waiting for the chat. What do you mean by the word disruption? Nobody has answered as yet. Vaibhav, they are being answered on YouTube, or somebody is saying it's a negative word. Okay. Yeah, I request It's a Sumit, word. if you can be, if you can help me with all those, answers, because Yeah, I'll be absolutely. asking a lot of questions and I am unable to see it. Yeah, it is there on YouTube because we are live on YouTube. So students are replying on YouTube. They are saying it is a negative word. It is a disturbance or a problem in an event. It has led down to financial instability. They are saying it's an obstacle. So majorly, right? they are saying disruption is a negative word. Right. Please read this line. Today, the most positive word is negative. Corona negative is the most positive thing we have around us. So disruption is never a negative word. I want to start this presentation by saying this. Disruption is never a negative word. Let me help you how. Imagine, the era 2005 and before. 2005 से पहले जो era था, we had an unstructured way of commuting. I hope if you'll, students, if you'll talk to your parents or your seniors in your respective places, you'll get to know. पहले जो टैक्सीज होती थी वो ऐसी होती थी, ब्लैक एंड येलो, एंड आई होप आप लोगों ने काफी लोगों ने देखी भी होंगी. Right? It was an unstructured market. If I talk about Delhi, so every bus stand has a taxi stand, adjacent to it. So bus stand के बिल्कुल पास में ही taxi stand होता था, और people used to book taxis, and there was no control for the customer to book a taxi. The price was very hefty. I mean, you have to pay a very hefty amount to book a taxi and to commute from one place to another. So this was an era before 2005. This is a time when I'm assuming that most of you were born, right? आप सब लोग इस time के दौरान पैदा हुए होंगे. So हो सकता है आप लोगों ने ये experience नहीं किया, लेकिन आपके seniors ने definitely, आपके parents ने, जो भी आपके elder लोग हैं family में, उन सब ने experience किया होगा. Now, from 2005 to 2015, there was a company called Meru, disrupted the business model. Disrupted, right? So please mark my word, disrupted the business model. What they did, they simply structured the transport system in India. Cabs को इन्होंने they have started purchasing cabs, उनको uniform way में present किया. Booking a cab was quite easy. But again, the control was there with the customer, because आप book कर सकते हैं cab और कहीं पे भी आप जा सकते हैं. But it was again because India is a price sensitive country, so it was again a very pricey affair. Then these two companies, Uber and Ola, since last 4 to 5 years, has disrupted the entire model. Kali Pili Taxi से Meru Cab से Uber and Ola. This is what the world, or if I'll talk about especially in India, has witnessed a kind of a disruption in business model in transportation sector. Now, why I'm saying disruption is not negative, because this disruption, what this disruption did was, first, allowed consumer to enjoy the service in a better way. Second, there was a value addition in the service. आज कैब्स की अगर मैं बात करूं, अगर आप ओला या उबर से ड्राइव करते हैं या जब भी ट्रेवल करते हैं, so the cabs are no longer
a car. I mean, you have options to play your music. You can watch movies, and you can book a cab to drive or to commute anywhere, any part of India. And the best part is, India being a price sensitive country, now you can book a cab at just 5 rupees kilometer. Earlier it was a pricey affair. पहले cab में book करने का मतलब होता था, yes you are, this is like moreover epitome of lavishness ki yes, I am spending a lot. Look, I'm traveling through a cab, right? And this is the future. Rather, this is the near future. 2019 लॉस एंजलिस ऑटो शो के अंदर Hyundai has unveiled their air taxi. Disruption in the business, disruption in the model, disruption in the economy is always fruitful. It is always beneficial for consumers and for the business economy. So Corona has disrupted the market, but yes, it has given us, it has paved us, ways for different businesses to grow. Online education is growing like anything. Health sector is growing like anything. Game sector is growing like anything. Logistics are growing like anything. E-commerce is growing like anything. So even in the challenging times of Corona, there is a lot of positivity around us. Plus, Corona has forced us to get new ideas for the business or to generate innovative ideas to do a business. I'll discuss all these with you in detail. So abhi aap ye samjhiye ki disruption is a positive word. Disruption is never a negative word. This is a mindset which we need to change. You guys are of around 16 or 17 years of age. Ritesh Agarwal, the founder of Oyo Rooms, started his business at the age of 17, and today he has a net worth of more than 6,000 crores. I can help you with all these examples, guys. Right? Now focus. Sabse important hai attitude. You have to change the attitude. If world is saying disruption is negative, don't believe it. Experience it. With these case studies, with these kind of case studies, with these kind of examples, experience it. Now, some more examples. Imagine the era, Doordarshan. 2000 and before 2000, Doordarshan was the only channel we had for our entertainment, for all the news, all the spirituality, all the engagement. Things got changed. 2010, market got disrupted, entertainment and TV sector got disrupted. We got private cables network. We got ZTV, we got Z Cinema, we got Z Smile, we got Star Plus, we got Sony, we got Star Gold, and so many channels. Disruption हुआ, price sensitive country के वो options मिले. दूरदर्शन से और DD न्यूज से लोग बाहर आए. They got 70-80 odd channels, जिसमें entertainment confined था. Right? With that, the customer got more options. But again, the control is not with the customer. Control का मतलब ये है कि जो दूरदर्शन आपको दिखा रहा है, अगर 10 बजे रंगोली आएगा तो 10 बजे रंगोली आएगा. You have no other option to watch any other channel. With Star Plus and ZTV, अगर क्योंकि सास भी कहीं बहू है, 9 बजे आएगा, so you have a dedicated time to watch that show. So the control of watching your entertainment, your interest, your shows which you have interest in, जो आपके genre के हिसाब से जो आपका entertainment, music जो आपका था, वो control आपके पास नहीं था, right? But within a decade's time,
2020 तक आते आते things have got changed. Entire control has shifted to the consumer. Price sensitivity, yes, very, very, reasonable. Prime Video, this is the time of Prime Video. This is the time of Hotstar. This is an era of Netflix. You can watch your desired shows anytime. You can watch spirituality. You can watch, news. You can get all the updates instantly, and that too whenever you want. That too, what do you want? Okay, so this is what business disruption is all about. I can only relate one company which has done disruption so far successfully in Indian scenario. The name of the company is Reliance Reliance Industries. टेलीकम्युनिकेशन से लेके आप किसी भी सेक्टर में देख लीजिए, रिलायंस इज नोन फॉर डिसरप्टिंग द मार्केट, और वो डिसरप्शन हमेशा कंज्यूमर को और रिलायंस को बेनिफिट ही दे के गया है. बहुत दूर की बात नहीं करेंगे. लेट्स टॉक अबाउट couple of years back, Reliance introduced Jio network. The prominent players like Airtel, Idea, Vodafone, they all got disrupted. They were forced to leave their market. They were forced to, come up with new ideas, how to, give lucrative options to customers so that they can retain with them. कैसे वो उनके साथ रिटेन कर पाए, इनके लिए नए आइडियाज निकले, और फायदा किसका हुआ? कस्टमर्स का. टुडे यू हैव द मोस्ट रीजनेबल इंटरनेट कनेक्शन इन द वर्ल्ड. मार्क माय वर्ड, in the world. One of my friend, he lives in Canada, right? He's paying 1,500 rupees per month for internet, and you are getting it almost for free, right? So this is what Jio has done. This is what disruption, has done to the economy. So guys, अब मैं जो करियर्स की आपसे बात करूंगा, इसको सिर्फ पढ़ाई मत लेके चलना कि 3 साल 4 साल 5 साल के एक कोर्स है, एक डिग्री प्रोग्राम है. नहीं, हमेशा याद रखो, आप कोई भी कोर्स करें, चाहे आप साइंस से हैं, ह्यूमैनिटीज से हैं, चाहे आप कॉमर्स से हैं, you all are the best lot of this world. In the world, in fact, you are the best lot. You are the most creative people in the world. और ये सब जो careers हैं, इनसे ये relate करना, अगर आप चाहे, see, this could be something which, I should take it. You might be working for an organization. You might be working for your own business. You might be working for an organization which has a product to sell. You might be working for an organization which has a service to render. लेकिन बेसिक रूल दुनिया का यही है कि या तो प्रोडक्ट या सर्विस किसी कस्टमर को आप दोगे और वो उसकी वैल्यू असेस करके आपको उसका रिटर्न देगा. दैट मीन्स यू विल मेक रेवेन्यू और प्रॉफिट्स और लॉस एज पर योर प्रोडक्ट एंड सर्विस. इसमें सबसे अच्छा कंपोनेंट आता है स्ट्रेटेजी. राइट टाइम पे राइट कस्टमर तक राइट इंफॉर्मेशन, राइट प्रोडक्ट, राइट सर्विस पहुंच जाए, ऐसी स्ट्रेटेजी अगर आपके पास है, वैल्यू एडेड सर्विसेज पहुंच जाए, ऐसी आपके पास अगर स्ट्रेटेजी है, सो यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी. ट्रस्ट मी, you will make a lot of money. Okay, as we have paucity of time, so let me quickly run this presentation for you. This is a study which is done by India Today Network. 93% of Indian students are just aware of 7 broad careers. 7 broad careers: law, design, management, accountancy, engineering, medicine, computer application. Right now, I can talk about more than 150 specializations with you. Guys, this is a time when we need to focus on specialization, not on the plain degree programs or a traditional one, because this will not lead you anywhere, right? Am I audible?
Yes, Vaibhav, you're Great, perfectly great, audible. great. Okay. So I'll start with the program called BDES. Okay. This is a program which anybody, commerce, humanities, or science guy can do, right? You are eligible. You are eligible for this program, a wonderful degree program which is known as design. This is a 4-year degree program. Bachelor's in design इसको बोलते हैं. This is a 4-year degree program equivalent to BTech. BDES product design. Guys, be ready with your pen or paper. If you want to write, you can write, or if you want to take screenshot of the presentation, you can. Look at the design. This is an award-winning product design. This is a chair along with, see, product design is what? Product design is everything around you is a product. It could be chair, it could be fan, it could be a pen, it could be a phone, it could be a refrigerator or an air conditioner. And every product needs a design. Now, why I'm asking this is one of the prominent and different course, because product design has a lot of demand nowadays. If we'll talk, so let's take a basic example. Mobile phones. Guys, हर 4 महीने में, हर 6 महीने में एक नया फोन लॉन्च होता है. फोन के बेसिक्स सेम रहते हैं, लेकिन उसकी लुक्स, उसके एस्थेटिक्स, राइट, उसके फीचर्स ये एड ऑन होते हैं. कैमरा सेंटर में रहेगा या बिल्कुल लेफ्ट अलाइंड रहेगा या राइट अलाइंड रहेगा, दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डिजाइनर टू डिसाइड. फोन या कोई भी प्रोडक्ट कितना फैंसी लगेगा, कितना उसके अंदर फीचर्स होंगे, कितना वो कैची लगेगा ताकि वो कस्टमर्स को अपीलिंग हो, and they'll buy that product. It is a responsibility of a designer, right? Basics are same. iPhone, I'll take a basic example. iPhone, Siri is same, iOS is same. What is changing? The looks are changing. The features are changing. The aesthetics are changing. So look at this. This is an award-winning product design example. A chair with a full aesthetics, looks, जिसकी बहुत अच्छी है, and it is serving the all, it is sufficing all the purpose, serving all the need. I have a table here, I have a space to sit, along with I have a space to keep my things, and that too at a place where we have a space crunch. So ये out of the box सोचना designer का काम होता है. I'll give some other examples. This is again an example of product design. India mein, plastics have got banned, and government is very, very particular about plastic bags. This is something which a designer came up with. Storage along with no plastic. And see how handy it is. This is what product design is. So guys, 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है. इसको बैचलर इन डिजाइन बोलते हैं, इसलिए इसको B.Des बोला जाता है. And this is product design. Now, why I'm talking about design? Because design is a common, program for all of you to go for. And go to Google Trends, see how design careers are shaping up. So now design has an upward slope. Upward slope, आप में से बहुत लोग जो इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं, relate upward slope क्या होता है? When things are rising, when there is a growth, when there is a trend which is upward sloping, उसे हम upward slope curve बोलते हैं. And product, or if I'll talk about design as a career, it has upward slope. It is increasing. So the demand for the designer is increasing. Next is transport design. Design के अंदर ही transport design has a lot of career option. ये भी 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होता है, open for all the streams. You can try your luck here. With this, you can work with any of the prominent companies into auto sector, from Mercedes to Volvo to Maruti to Honda. Designing a new car. आपके सामने जो picture है, this is Bugatti Veyron, one of the expensive cars we have in world, right? In India, we just have 3 cars like this. And उसके साथ में जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ओल्ड मॉडल दिख रहा है, वो लगभग 16 साल पुराना Bugatti Veyron है, right? So from old Bugatti Veyron to the new, Bugatti Veyron looks, aesthetics, and design sector
This is how transport sector is increasing. Transport sector, guys, I'll give more examples to it. Kia Seltos. Kia Seltos is a perfect example for Indian auto sector. Imagine this. India प्राइस सेंसिटिव कंट्री है, इतनी प्राइस सेंसिटिव कि हम हर चीज सोच समझ के खरीदते हैं. That's why Maruti since last 40 years dominating with its products. और मारुति की जो गाड़ियां हैं, they are not that premium, but still we are buying it. Why? Because they are average friendly. किया सेल्टोस ने आते ही क्या किया? आज तक इंडिया की हिस्ट्री में, ऑटो सेक्टर की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि नया ब्रांड और नया प्रोडक्ट, I'll be reiterating it, please focus, नया ब्रांड नया प्रोडक्ट आते ही हिट हो गया हो. कभी भी ऐसा नहीं हुआ. MG आया, हेक्टर आया, not a hit. Tata, such a old brand, now they are revamping themselves, not a big hit. Maruti, such an old brand, they are dictating because of their price sensitivity. कभी भी ऐसा नहीं हुआ. Volkswagen, you can name Renault. I mean, there are a lot of products which are there in the market, but they're not hit. But Kia, the moment a new brand came into auto sector with a launch of a new product called Kia Seltos, was a hit. Why? Because they are offering all, they have all the ticks in their boxes. And this is how transport sector is changing. Interaction design, look at this. This could be an example of product design also. Mobile phone, पिछले 25 सालों में कितना चेंज हुए हैं. This was the mobile phone, on your extreme left, this was a mobile phone introduced by Philips 25 years ago. और बिल्कुल लास्ट में you have an iPhone, right? So this is how a product has changed. But now when we are talking about a product, today we are talking about the interaction with the product. Interaction means how tech friendly that product is. Okay. Again, another question to all of you. I want your answer. आप लोग शॉपिंग करते हैं? आपके पास दो वेबसाइट्स हैं. शॉपिंग करते हैं अपैरल्स की, यानी आप क्लोथ्स शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन. आपके पास दो वेबसाइट्स हैं, दो एप्लीकेशंस हैं, Myntra.com and Jabong.com. Which one do you like the most? Answers. Sumit, help me with the answers. Please respond on the chat box. Yeah, so please. Feel free to write your answers in the chat box. For clothes online shopping, for your textile, for your clothing shopping, which brand do you prefer, Myntra or Jabong? Yeah. Sejal is answering Myntra. I mean, a lot of Angad is saying Myntra. Shikhar is saying Myntra. See, why Myntra? Because the interaction is wonderful. Jabong में जो प्रोडक्ट है वही Myntra पे भी है, जो Myntra पे है वो Jabong में भी है. Or you might find some different products in both the applications. But why Myntra? Why we are preferring Myntra? Because of the interaction. Interaction means the application is very friendly. You can easily navigate into the application. You can easily locate your product. You can easily filter out, the product as per your needs, as per your price sensitivity, as per your, brand sensitivity. I mean, you can do anything. And this ease of, selecting your brands and interacting with an application is design interaction. जिसको हम इंटरेक्शन डिजाइन बोलते हैं, जिसमें यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस आता है. इसका बहुत अच्छा और रीसेंट एग्जांपल है मेरे पास, जिसको हम बोलते हैं आरोग्य सेतु ऐप. आज today the entire India has this app in their cell phone. Almost all who are using cell phones, they have this app. And especially in Delhi, especially in corporates, it is mandatory. So I cannot enter my workplace if I don't have this app. And this app is so simple. I can track whether I'm safe or not, whether I have, I was in contact with some, corona affected person, or what to do, how to safeguard myself, how to, how to take precautions. It is so simple. In fact, it can, this app is telling you whether how much cases you have around you within a distance of 500 meters or 1 kilometer. I mean, see, the point is the user interface. If it is simple, it allows you to navigate easily. You can use this app, whenever you want and wherever you want to.
सो आज डिजाइनर्स की सबसे ज्यादा डिमांड यहीं पे है. जबोंग इज हायरिंग लॉट ऑफ डिजाइनर्स, इंटरेक्शन डिजाइनर्स, ताकि उनकी ऐप भी इतनी टेक फ्रेंडली बन जाए, इतनी अपकमिंग हो जाए कि वो मिंत्रा को बीट कर दे. और मिंत्रा इज हायरिंग मोर डिजाइनर्स सो दैट दे कैन, यू नो, they'll keep that position कि वो बेस्ट हैं in the market. So this is what interaction designing is, guys. 4-year program, huge, you know, potential. I mean, lot of scope. Next, game design. Look at the picture. कौन सी गेम है? फटाफट chat box में आंसर कीजिए. Which game I'm talking about? Which is there on the screen? So Pranav says Okay, Mario. Pranav says Dishti, Mario. Yeah. Mario Kart. So we have a lot of game freaks around us. Great. Right. So look at the game. When I was, at of your age, or शायद उससे भी पहले, I used to play, the game Mario with extreme left kind of a character, chasing all the coins, jumping, catching mushrooms, clearing all the levels. And today, look at the latest edition of Mario. So game, guys, कोरोना में गेम इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है. आपने सोचा नहीं होगा, पहले सिर्फ एक ड्रीम 11 की एड देखते थे आप टेलीविजन पे. आज MPL, लूडो किंग, आई मीन XYZ पीपल, आई मीन all the celebrities are engaged doing, ads of games, right? Gaming industry is increasing. I'll tell you my example. I mean, I'll tell you, at UPS, the highest package, one of our students have got highest package of 40 lakh rupees annually, and he was placed, he's working with one of the prominent game company of Netherlands, Ubisoft, right? So gaming is increasing, and it's not just about games, guys, it's about gamification. इस वर्ड को प्लीज गूगल कीजिएगा, गेमिफिकेशन. गेमिफिकेशन का मतलब क्या है? आपका प्रोसेस गेम के थ्रू बना दिया जाता है. आपने देखा होगा, आप एप्स में जाते हैं, उसमें एक व्हील आता है, यू हैव टू क्लिक ऑन अ बटन, द व्हील विल स्विंग, पूरा रन करेगा वो, and it will give you some points. This is a gamification of a process. So rather than scratching something or clicking on a button to get rewards, they have gamified this process. And this is happening everywhere. This is happening everywhere. Today, if you'll virtually go to UPS, so there could be a gamification. Play some games, get some, quiz. So this is how things are changing. So gamification has a lot of scope. So game design 4-year degree program has a lot of scope. Which movie I'm talking about? Animation and VFX design? Avatar. It's been 15 years this movie got released, and look at, the aesthetics. Look at the design. So guys, animation. आज छोटी सी छोटी डॉक्यूमेंट्री, एक छोटी सी छोटी एड, और एक बड़ी से बड़ी मूवी भी आपकी एनिमेशन और VFX से बेस्ड है. चाहे वो बाहुबली हो, चाहे वो पानीपत हो, चाहे वो बजरंगी भाईजान हो. आप लोगों ने देखा होगा एक ग्रीन स्क्रीन होती है. सो एक how animation is how we are working on animation in today's scenario is there's a green screen. We call it Chroma as a software, which allows you to do changes in your background. Even you can change, the character. You can do a lot of changes. This is a future. And guys, if you have your own YouTube channel, आप अपनी videos बनाते हो, this could help you to create or design or edit class videos. Wonderful videos which you can showcase to the entire world. So अगर आपको अपने add-ons करने हैं, value addition करना है अपने YouTube channel पे, अगर आपका YouTube channel है, आप videos बनाते हो, so animation and VFX will help you to design wonderful videos. Okay, quickly to other. Okay, so this is interior designing, interior and retail space. Soha Ali Khan. If I'll talk about, actresses like Suzanne Khan or Gauri Khan or Twinkle Khanna, they all are interior designer for the Bollywood. Similarly, we have a lot of interior and retail designers. अगर आप Big Bazaar shopping करने जाते हैं, look at how, wonderfully it is designed and placed. Things are placed in a very different sections, right? Apart from that, look at the corporate world. Come to Gurgaon or Noida, you'll find corporate worlds like, the offices are like so beautiful.
you seriously fall in love with that. Or this is the time when we are going to launch, we are going to restaurants, we are going to hotels. जितना भी इंटीरियर है हैज अ लॉट ऑफ स्कोप. ये भी 4 साल का प्रोग्राम है, इंटीरियर एंड रिटेल स्पेस डिजाइन. दिस विल हेल्प यू टू work with companies like and Cushion Field, or you can be your own interior designer, or you can work with prominent companies like DLF, or prominent real estate designers, so which will help you to develop new designs for hotels, prominent houses. And this is something which has a lot of scope. So the next is we have, okay, now let's talk about LLB as a career. Design. Vaibhav, I'll just interrupt you here. In fact, many of the students, when they think about design, they have a small, I'll say, myth or a block into the mind, which is, it is all about designing something or creating a drawing and all. So if you can just enlighten them that designing is all about the creative thinking, which that they're in the mind. Guys, just for 30 seconds, so you can put it. Right. So designing, gone are those days when we talk design as you have to sketch something. कि आप एक कॉपी और पेन लेंगे, उस पेंसिल लेंगे और स्केचिंग करेंगे, राइट? अगर आप बैक बेंचर हैं और आप अपने टीचर्स को स्केच करते हैं या अपने फ्रेंड्स को स्केच करते हैं, yes you have creativity but you are not a successful designer. Designers, if you want to work as a designer, you need to have design thinking, you need to have creative ideas. सबसे पहला होता है creative idea. Second, we are working on softwares. We are working on tablets. So, art sketching is not required anymore. Yes, it is required as to start off with. But yes, we have full-fledged devices where we are working, and we have softwares like I've mentioned Chroma. Then we have MATLAB. We have a lot of softwares where people work extensively and their design. So 2D to 3D, there are a lot of designs, there are a lot of nitty-gritties which you should focus. And UPS and Pearl Academy, right? So we are known for designing, and we have given prominent designers to the world. So हमसे अच्छा design को कोई नहीं समझ सकता in India, if I'll talk about. So whenever you require any help, Sumit is there, I'm available. We can talk about that in detail. I hope I have answered the question. Right. So, okay. So now let's talk about LLB. Thanks to Bollywood, we relate LLB as Jolly LLBs or Tariq pe Tariq, but this is not serious LLB. I'm talking about a LLB program, which is an integrated 5-year degree program, that too an honors program, which will help you to work with corporate world. Guys, मैं जब भी बच्चों से interact करता हूँ, so LLB में बच्चों के माइंड में होता है कि I have to work with the corporate world, so I have to go for corporate LLB. That is corporate law, right? But let me help you. We have a lot of LLB specializations. Rather, I would call it super specializations, जो आपको corporate world में as a legal advisor, as a legal professional काम करने के लिए allow करती है. Along with it, LLB is a program, especially when we talk about LLB, which is there in Bollywood, that is criminal LLB or constitutional LLB. It is confined to Indian, periphery, Indian walls, boundaries. The specialization I'm talking about will allow you to work outside India. That means you can work with Indian and international law firms, prominent law firms. And law is a wonderful career. आज से नहीं, बहुत सालों से law ने ये prove करके दिखाया है कि law एक बहुत अच्छा career है. Because अगर आप हमारे father of nation की बात करें, महात्मा गांधी, he was a law professional. The first prime minister of India, पंडित जवाहरलाल नेहरू, he was a law professional. आज आप पॉलिटिक्स में आप देखें या जितने भी आप सीनियर लोग देखें जो एफिलेंट हैं फैमिली, they are from affluent families and they are prominent figures in our society are from law field, right? So law and media entertainment. So without wasting time, let me discuss about the law specializations. Media entertainment law. मैंने अभी आपसे बात करी कि आप टेलीविजन और हम मूवीज की बात कर रहे हैं. टाटा स्काई, एयरटेल ओपन कीजिए. जब आप ओपन करेंगे आप देखेंगे 500 से 600 चैनल्स हैं. दैट मीन्स 600 कॉर्पोरेट हाउसेस.
and they all need media entertainment lawyer to assist them with their legal formalities. Contract बनाना है, agreement sign करवाने हैं, mergers करवाने हैं. I mean, there are a lot of things which a lawyer is involved in too. And today there's a era of Netflix. Today's a time when we have Prime Video, we have Z5 around us. जितने भी movies में आप disclaimers देखते हैं, वो disclaimers की language क्या होगी, उसमें क्या perfect wording use होगी, it is all about law, right? So media entertainment law will help you to work with prominent companies like Times of India, Z Media, right? Or you can work with any of the entertainment, companies like Red Chilli Entertainment, Shah Rukh Khan, Salman Khan Films. आप उनमें भी काम कर सकते हो as a legal advisor, or you can work with prominent law firms and assist all. So, Vaibhav, how I understand this is what you are by referring to LLB in Media and Entertainment Law. What you are actually trying to tell the students and the entire lot of audiences who are tuned in is that there is more to law than just basic simple litigation in the courts. Is that what you're trying to imply? Vaibhav? Ma'am, absolutely. Your point is absolutely right. Because what? Yeah, because if my knowledge goes is because because the students should understand that there is a certain set of law means because the Bar Council of India recognizes all the LLB degrees need to be approved by the Bar Council of India. But the traditional, that's a conventional way of getting into the profession of law. So there is a right. Of what you say, a back office, a chamber practice which is available, and it comes through going in for courses like he just mentioned in media on law, which actually does not need approval of its course by the Bar Council of India. So the time has come. So now you're audible. Yeah, Vaibhav, you're audible. Of court practices, right? So that option is available to students. Should they opt for courses like this? This is what Vaibhav you implied. Yes, exactly. Okay. And in fact, to ma'am, add to what you are saying is because when we talk about law, we generally talk about civil law, criminal law, or constitutional law, or like basic laws. So there are so many different verticals and specialization into it, which we are not aware, which can be of our interest area, but because we are not aware, we are not looking into it. So Vaibhav is that's why putting in the different streamlined law programs in this presentation. So yeah, please continue, Vaibhav. This is going. Yeah, so we call it super specialization. Yeah, ma'am, please. Yeah. Please. No, that's good enough. I just wish the students to know that this is beyond the convention. These are the options which are available. It's a beautiful field to be in, and these are the options which go beyond the purview of the courtroom litigation. Yeah. Yeah, so you can work with companies like Reliance. You can work with companies like ONGC, Indian Oil, Bharat Petroleum, Shell, Schlumberger, GE. I mean, all the companies which are into energy domain. And guys, you have a huge, opportunity. I mean, this is an opportunity you can work with, companies which are based out of Gulf countries or America or Australia, because they are really working a lot on energy projects. Okay, so next we have in law, international trade and investment law. So any company which is expanding, which is going out, or MNC which is coming to Indian territories, you can assist them with their businesses. Plus, I'll give you an example. Real Juices. अगर आप Real Juices के बारे में देखेंगे, so Real is a brand of Dabur, and Real Juices, they have a plant set up in Nepal where they produce real juices. So Dabur Nepal export the juices to Dabur India, and then Dabur India market or sell all these juices to entire Indian states or cities. So how Dabur Nepal is connected to Dabur India? What are their functioning? It's all about international trade and investment law, right? So today India is talking about mutual funds. We are talking about investments. We are talking about FDIs. We are talking about FIIs, that is foreign
इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स. सो ये जितनी भी जो इसके लिटिगेशंस और जो भी इसका लीगल aspects हैं, as a layman I'm talking to you, so is covered by LLB in international trade and investment law. So it has a lot of potential. It is a promising career. This is a 5-year degree program, guys, which is approved by Bar Council, and you have all the options, whether you have to practice it or if you want to work with corporate world, you can corporate world. Even you can go for teaching after pursuing your LLB. At UPS, we have signed an MOU with one of the largest universities in law field, that is University of UK, which is in London, and which offers the premium law programs. So at UPS you can experience University of UK as well. So will help you to go out to University of UK for 4 weeks and to get your to refine your studies. Along with it, if you plan the master degrees, that is LLM, so you can also go to University of UK and pursue your LLM from there. So next we have in the list is BA Public Policy. जिसका भी IAS, IPS, IRS और गवर्नमेंट जॉब ड्रीम है, guys, please write it down. This is a best program for you. 3 years degree program. Please focus on this 3 years degree program, which has an integrated inbuilt civil services coaching. Day 1 से BA और civil services की कोचिंग चलेगी. 3 साल तक कोचिंग करेंगे civil services की, and आपकी BA की पढ़ाई होगी under the same roof. So you don't have to rush to some other coaching institute from your college. This will save a lot of time for you, and this will allow you to do a lot of self study. IAS, IPS, public policy अगर आप focus करते हैं, so self study is the key. So for self study, we have designed a program. So will be imparting you with BA program, courses along with the civil services coaching. Vaibhav, just to interrupt you, there was a question in QA section by someone who was interested for UPSC exams. So guys, whosoever is interested for civil services or any central level exams or IAS and all, so this is the best program, and people are not aware about this program. That is, it is bundled in such a beautiful manner, because complete 3 years you are doing the coaching also, and this is a fact also. Once you are doing a coaching through your graduation period, your success rate is quite high. Whatever, if you're talking about dropping an year and preparing and then clearing it out, the success rate percentage is very, very low, near about 7 to 8%. So you can always look for it. If you need more details, I will be there. Vaibhav, please continue. Yeah, Sumit, thank you so much. Sumit, I have a very lengthy presentation. So can we take questions in the last 15 minutes of the presentation? Sonal ma'am, because we started a little late. There's absolutely no problem. We can take up the questions once he's done with his presentation. Right. So you can just going through the presentation, and if ma'am you feel we need to rush up, just let us know. Right. So another program in the kitty is BA Digital and Mass Media. This is a wonderful program. Again, if you have your own YouTube channel, so this will help you to create wonderful videos. This will help you how to narrate a story, how to become a perfect storyteller, और mass media को आप कैसे cater कर सकते हैं. Like, see, जो रेडियो पे चल रहा है, अगर वो टीवी पे चलेगा, you might not find it fit, right? जो टीवी पे है, अगर आप उसे नॉर्मल यूट्यूब पे चलाएंगे, you might not find it fit. So there is a way of expressing your thoughts. There is a way of dealing with mass media. So I mean, mass media is not just about electronic media. We are talking about print media. We are talking about online media. So there are a lot of mediums through which you express your thoughts. You get connected to people. You tell your stories. So this is a program, 3-year program, which will help you to understand things in a better way in digital and mass media platforms. Okay, then we have BA in advertising and digital media. How do you advertise? Again, this is very, very different. 3 years का program है advertising and mass media से मेरा मतलब इसमें ये है कि you'll be working with companies like CL.
GL is a company which is an advertising firm which creates advertisements or television commercials for Samsung, for Oppo. So आप लोग इन लोगों के साथ काम करेंगे, इनके लिए वीडियो एडवर्टाइजिंग करेंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे. That means how to promote a brand on Facebook, how to promote a brand on Instagram. Even lot of people nowadays are promoting their brands only on social media. So बहुत आपने आसपास देखा होगा, बहुत लोग आपके फ्रेंड्स हैं जो शूज का काम करते हैं या फिर जो garments का काम कर रहे हैं, and they're promoting their brands on social media. So how to effectively promote your brand on social media, you will learn in this. Email marketing, how to send emails which has that kind of a connect which helps you to persuade your customer who will be reading the email. So this is you will learn. If I'll talk about bulk SMSs, how to send bulk SMSs, display in mobile ads, कैसे ads बनाएं, कैसे उसे display करें, you will learn everything with this. Influencer marketing, how to write a blog. Bloggers are influencers. So how to write a blog, how to add values to blogging. So this is something which you will learn in this program. So it is a 3-year program, huge scope. Because आज एडवर्टाइजिंग और डिजिटल मार्केटिंग का बहुत स्कोप है. बिकॉज वी आर नॉट कन्फाइंड टू न्यूज़पेपर्स ओनली. जो पहले न्यूज़पेपर के अंदर एक लीफलेट आता था, हमें पता चलता था कि साथ में स्टोर खुल गया है और वहां पे सेल लगी है. No more leaflets, guys. We are living in a digital world, and digital has a lot of scope. Okay. क्या आपने कभी ऑनलाइन होटल सर्च किया है? फटाफट आंसर. Which brand I'm talking about? Quickly. We don't have much time. 2 seconds. Which brand I'm talking about? क्या आपने कभी ऑनलाइन होटल सर्च किया है? Trivago. Yes, मुस्कान said Trivago. Deepak said Trivago. Sanpreet Kaur said Trivago. Said, yeah. Sorry. Okay. So lot of answers. So Trivago. Maximum are saying Trivago. Yes, it is the right answer. Now another question. I guess this was one of the toughest questions I have asked. So I'll be asking another easy question. What is the name of this gentleman on the screen? What is the name of this gentleman on the screen? Guys, this is a case study which I have designed for you specifically. आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगी. ये मैंने आप लोगों के लिए डिजाइन करी है ताकि आप लोग कुछ अलग सोचें. अभी हमने मीडिया की बात करी, अभी हमने डिजाइन करियर की बात करी, हमने लॉ की बात करी, हमने डिजाइन थिंकिंग की बात करी, हमने क्रिएटिविटी की बात करी. Who is this guy? Please don't use Google. Ashmeet Singh so says his name is Abhinav Kumar. Yes, his name is Abhinav Kumar. Guys, he is the face of Trivago. आपने इनको Trivago की एड में बहुत देखा होगा. मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, what is his designation? Is he a founder of Trivago? He is a CEO of Trivago. Who is he? Vishwesh says CEO. Wrong answer. Because we are in India and we do a lot of guessing. So Sanovarpreet says CA. Samanpreet says advertiser. Pranav says development head. All. Ashmeet says Indian cricketer. See, guys, this is what we are missing. This is what we are lagging off, right? We have seen Trivago ad. पूरा IPL, पूरी movies, जितने भी हमारी सीरीज चल रही होती हैं, हम लोग Trivago की ad में इनको देखते हैं. He comes and he do ad in a very funny way. Let me help you with this. He's a guy who hails from Bihar. He is the country head of Trivago. Trivago is a subsidiary of Expedia. Okay. So why I'm discussing this? He added the wow factor in the marketing and advertising industry. इन्होंने अपनी कंपनी के लिए करोड़ों बचाए. इन्होंने 100 करोड़ रुपए अमिताभ बच्चन को नहीं दिए कि आप आइए प्लीज ऐड कीजिए Trivago के लिए. इन्होंने 50 करोड़ सलमान खान को नहीं दिए कि आप आइए और हमारी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करो. और सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट इसको बोलते हैं. सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट इन्होंने नहीं करवाई. सो ही सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी. सेकंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज देयर इन द बिजनेस. आप हम सब अपने करियर की बात कर रहे हैं. करियर में मैंने आपको बताया था एक प्रोडक्ट होगा, एक सर्विस होगा और एक आपका ब्रांड होगा. अगर आप उसे रिटेन कर सके, आप अपने कस्टमर्स को, अपने ब्रांड को रिटेन करवा पाए, देन ओनली यू विल बी कंसीडर योरसेल्फ एज अ सक्सेसफुल एम्प्लॉय. दिस इज व्हाट ही डिड. मैंने आपसे एक सिंपल सी टैगलाइन पूछी, क्या आपने कभी ऑनलाइन होटल सर्च किया है? आपने Trivago. I mean, everybody flooded, me with all the answers like Trivago, and Abhinav Kumar. हमने कभी नहीं सोचा who is this gentleman, why he comes and do this ad. The guy from Bihar become a country head of Trivago India.
did this ad in such a wonderful way that it helped us retain this brand Trivago. आप शायद yatra.com, आप शायद Myntra, makemytrip.com, Expedia, Thomas Cook और Cox and Kings, Airbnb, ऐसे किसी ब्रांड पे आप नहीं जाएंगे. अगर आप ट्रैवल प्लान करते हैं, आप वेकेशन प्लान करते हैं, आप सिंपली ट्रिवागो को ओपन करेंगे, ट्रिवागो से आप होटल्स बुक करेंगे, आप अपने वेकेशंस को प्लान करवाएंगे, एंड ट्रिवागो मेक्स अ लॉट ऑफ मनी थ्रू दिस. दिस इज व्हाट ही डिड. दिस इज व्हाट डिजाइन थिंकिंग इज. दिस इज व्हाट क्रिएटिविटी इज, जो मैं आप लोगों में चाहता हूँ. अगर आप भी कुछ अलग सोचते हैं, कुछ हट के सोचते हैं, द एंटायर वर्ल्ड इज देयर फॉर यू. स्काई इज द लिमिट. ट्रस्ट मी, स्काई इज द लिमिट. अब आपको ये ट्रिवागो की एड में नहीं दिखेंगे. Why? Because he has joined as a vice president marketing for Paytm. So अब ट्रिवागो की एड अगर कभी आप देखें, थोड़े दिनों में IPL स्टार्ट हो जाएगा, you might find Trivago everywhere. So you will not find this guy in Trivago's ad. Okay. I hope this is a very unique and helpful case study for you. Next is we have BA honors energy economics. जो लोग इकोनॉमिक ऑनर्स करना चाहते हैं, आज उनके लिए एक बहुत अच्छी प्रपोजिशन है एनर्जी इकोनॉमिक्स, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट analysis, it's all about trend forecasting, it's all about risk forecasting. So energy economics will help you to forecast the business, to find trends, to find analysis, and this has a lot of scope. 3 साल का प्रोग्राम है, बहुत डिमांड है. KPMG, Deloitte, they need people like you to work with them. Niti Aayog is working extensively on projects, so you can work with Niti Aayog into energy sector, energy domain. Next, we have BBA. So let's talk about BBA here. BBA entrepreneurship. I'm talking about family business. I'm talking about entrepreneurship. If you want to start your own business, if you want to scale up your family business, this is a program, 3 years degree program. BBA के बाद आप MBA भी कर सकते हो. So 5 साल का एक प्रोग्राम होता है, जिसमें 3 साल की BBA और 2 साल की MBA होती है. It is not integrated. Please mind it. It is not integrated because we don't want to bound you with the specialization. अगर आप BBA and entrepreneurship में करते हैं, so you have a right or you have an option to go for MBA in digital marketing or MBA in oil and gas management. So there are a lot of options which are available for you. Let me quickly run through this. Career aspects, आप अपना family business कर सकते हो, business advisor बन सकते हो, investment कैसे मिलती है, angel investor और funding कैसे generate होती है, वो आप इसमें सीख सकते हैं. Again, 3-year program. Dubai Airport has a swimming pool. IGI Delhi Airport, अगर हम बात करें, Indira Gandhi Airport is not just a place where plane take off and land. It is a place where you can do a lot of shopping. It is one of the biggest malls we have, kind of a mall we have in Delhi. So aviation sector बहुत ज़्यादा change हो चुका है. Air freight management से लेके air ऑपरेशन मैनेजर बन सकते हैं आप. एयरलाइन ऑपरेशन को आप संभाल सकते हैं. बुकिंग एंड रिजर्वेशंस आप देख सकते हैं. कार्गो मैनेजमेंट कर सकते हैं. एविएशन ऑपरेशंस कर सकते हैं. सो एविएशन हैज अ लॉट ऑफ स्कोप. यू विल डिसाइड विच पायलट विल फ्लाई विच प्लेन. You will decide how many cabin crews and which cabin crew will fly in which plane, and how many ground staff you need. So you will be working with companies like Lufthansa, Etihad. There lot of career options available for you. Next, quickly we have auto marketing. एग्जाम्पल देके समझाता हूँ. 3 साल का प्रोग्राम है BBA ऑटो मार्केटिंग. मारुति ने नेक्सा ब्रांड क्यों बनाया? पिछले 40 साल से मारुति अपनी गाड़ियों को बेच रहा है, बहुत ज्यादा अच्छे से लीड कर रहा है मार्केट में, लेकिन with the competition of Hyundai, with the competition of Honda, Kia, and a lot of prominent companies nowadays coming into the market, Tata is revamping themselves. So Maruti faced the heat. उनको competition की heat feel हुई. उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला let's have a different brand with the name called Nexa, जिससे customers की मार्केटिंग परसेप्शन चेंज करते हैं. सो कस्टमर परसेप्शन चेंज करने के लिए उन्होंने नेक्सा बनाया. यही ऑटो मार्केटिंग में आप सीखेंगे. हाउ टू मेक बिजनेस, हाउ टू जनरेट बिजनेस फॉर ऑटो सेक्टर कंपनीज लाइक मारुति, लाइक होंडा और मर्सिडीज. आप उनकी एजेंसीज मैनेज करेंगे, उनके प्लान्स मैनेज करेंगे, आपकी अकाउंट मैनेजमेंट उसमें आप करेंगे. इट हैज अ लॉट ऑफ स्कोप. सो सी, अगर आई एम टॉकिंग अबाउट नेक्सा, मारुति की गाड़ियां आज भी मानेसर प्लांट पे बन रही हैं. वही सेम स्टील, वही सेम पेंट उसमें यूज हो रहा है, बट वी आर पेइंग 1 लाख एक्स्ट्रा और अराउंड 70-80,000 एक्स्ट्रा फॉर बलिनो rather than Swift.
Both the cars are of same, functionality, same cabin space, same, specifications, but we are paying extra. Why? Because of the perception that Baleno is a premium car from Maruti and it has a Nexa badging. सो गाइस, ये जो परसेप्शन क्रिएट करना है ऑटो सेक्टर के अंदर कि उसको कैसे प्रीमियमली बेचना है, या अगर आप अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं जिसमें आप ऑटो सेक्टर के अंदर आप यूट्यूब अपने वीडियोस बनाते हैं, this has a lot of scope. So you know how to sell, how to market a brand in a different way. BBA डिजिटल मार्केटिंग 3 साल का प्रोग्राम है. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, कैसे गूगल कीवर्ड्स के साथ खेलते हैं, कैसे आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन स्पेस पे प्रमोट कर सकते हो और किसी दूसरी ब्रांड को प्रमोट कर सकते हो और उनकी वेबसाइट्स को. दिस इज व्हाट डिजिटल मार्केटिंग इज. सो डिजिटली वी आर डूइंग इट थिंग्स. इसमें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी बहुत यूज होने लग गया है, जिसको बोलते हैं कुकीज. आपकी कुकीज सेव होती हैं, आपकी जो परचेजिंग पैटर्न्स हैं, आपकी परचेजिंग हैबिट्स को रजिस्टर किया जाता है और उसके थ्रू आपको वो एड्स, वो सेल और वो सब चीज़ें आपको गूगल कीवर्ड्स के थ्रू और आपकी ब्रांडिंग के थ्रू आपको दी जाती है. सो दिस इज व्हाट बीबीए डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट. सो आप डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट बन सकते हैं, डिजिटल बिजनेस डेवलपमेंट कर सकते हैं. B2B इज बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग मैनेजर आप बन सकते हैं, कंटेंट मैनेजर बन सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं. सो इट हैज अ लॉट ऑफ स्कोप. गाइस, दिस इज अ वंडरफुल फील्ड. Lot of companies are focusing on digital marketing. Why? Because this is a time when we have data all around us. Howdy Modi. Last year, Modi ji went to America and had a very gala, event. And there he mentioned data is a new oil. Guys, ये line आप Google पे देखेंगे, बहुत trending है. Data is a new oil. So data is something which a lot of people are focusing on. So digital marketing is a promising career you have. Next we have media and event management. How to plan or how to work with prominent, media houses into their media and event management, profiles. So आप मीडिया प्लानिंग करेंगे, आप एड एजेंसीज को मैनेज करेंगे, PR फर्म्स, प्रेस रिलीजेस, कंटेंट राइटिंग, ये सब चीजें इसके अंदर आप मैनेज करते हैं. इवेंट मैनेजमेंट, हाउ टू फॉर एग्जांपल आई वाज विद जी मीडिया. सो जी मीडिया हैज अ वर्टिकल कॉल्ड जी सिनेमा और वहां पे जो इवेंट मैनेजमेंट वाली टीम है वो पूरा का पूरा जी सिनेमा अवार्ड मैनेज करते हैं. So they are from the event and media background. So this is something which is very different. So you'll be a manager, you'll be a middle level manager, or you'll be an executive working with prominent companies in media, industry like Times of India, like Percept. Percept is a company which is behind a very successful music show called Sunburn. आपने सुना होगा Sunburn. इस समय गोवा में हो रहा है, कई बार मुंबई में होता है और इट्स लाइक वेरी प्रोमिनेंट, राइट? सो you can work with these companies. Huge career option, guys. Next we have BBA in financial analysis. अगर आप numbers में अच्छे हैं, if you are good with numbers, आपको accounting, आपको if CA, becoming a CA is your dream, so you can go for this program. This is 3-year degree program, BBA financial analysis. इसके बाद आप MBA भी कर सकते हैं इसमें, और आप अच्छे प्रोमिनेंट मनी लैंडिंग कंपनीज में, आप बैंक्स में, आप प्रोमिनेंट कंसल्टेंसी फर्म्स लाइक KPMG, मर्सर, इन सब में काम कर सकते हैं एज अ फाइनेंशियल एनालिसिस्ट, रिस्क मैनेजमेंट एडवाइजर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, क्रेडिट एनालिसिस्ट, रिलेशनशिप मैनेजर. ह्यूज करियर ऑप्शन. इसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ इंटर्नशिप होती है. द प्रोग्राम इज डिजाइन्ड इन अ वे दैट वी विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज equity, what is stock, what is debenture, what is the financial instruments you have in the system. Next we have John Abraham, BBA Oil and Gas Management. This is a wonderful program, guys. ने John Abraham, विराट कोहली, धोनी को lubricant oils, scooty oils, car oils की ऐड करते हुए देखा होगा. This is a sector which has a lot of potential. I was talking about energy, I'm talking about oil and gas. इतना स्कोप है कि आप सोच भी नहीं सकते. मार्केटिंग के लिए भी नीड मैनेजर्स. बहुत सारे बच्चों को इस करियर के बारे में पता ही नहीं है. द अनफॉर्चुनेट थिंग इज दे आर नॉट अवेयर अबाउट दिस. You can work with prominent companies like Calistro. You can work with prominent companies like Reliance into their energy domain, and आप उनके लिए brand management करेंगे. You'll be hiring John Abraham to come and do ad for them. You'll be asking them for their loyalty programs. You'll be working with their city gas management.
उज्ज्वला योजना, आप मोदी जी की उज्ज्वला योजना के बारे में पढ़िए. मोदी जी इज सप्लाइंग LPG सिलेंडर्स, LPG गैस टू एवरी विलेज इन इंडिया. और यहाँ तक जो गैस जा रही है, ये सब चीजें पहुंच रही हैं, इससे एनर्जी सेक्टर का कितना डिमांड बढ़ता जा रहा है. जो इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं बच्चे, दे कैन रिलेट. इफ द डिमांड इज हाई, प्राइस इज ऑलवेज हाई. सो जहां डिमांड बढ़ती जाएगी वहां प्राइस बढ़ेगी, वहां प्राइस बढ़ेगी तो आपका प्राइस बढ़ेगा, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपके फीचर्स बढ़ेंगे. सो BBA ऑयल एंड गैस मैनेजमेंट हैज लॉट ऑफ पोटेंशियल. इंडिया से बाहर गल्फ कंट्रीज में, अमेरिका में, देयर आर लॉट ऑफ प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी विद दिस प्रोग्राम. नेक्स्ट, I've mentioned about data. Data is the oil. So today we are working, living in a digital world, digital space where we have data all around us. Right time पे right data कैसे structured होगा, कैसे store होगा, कैसे पहुंचेगा management के through. I mean, see, as a science student, you have worked with big data. आप data structuring करेंगे. As a manager, you will use that data for your own business. So this is what Big BA, Big Data and Business Analytics is. Data scientist, trend forecasting, risk forecasting, data mining, risk advisor. Huge career of option. So these all are 3-year programs. इसके बाद आप masters भी कर सकते हैं इसी में, MBA कर सकते हैं, which has a lot of potential. I've mentioned strategy is the key. So there is another case study. छोटी सी case study है, थोड़ा जल्दी समझाऊंगा. जिसका crux क्या है? गुड प्रोडक्ट और पुअर स्ट्रेटेजी इज इक्वल टू लॉसेस. एक ब्रांड के बारे में आपने सुना होगा, इसका नाम है डंकिन डोनट्स. सिर्फ 6 साल पुराना ब्रांड है, राइट? इसको डंकिन डोनट्स इज एन अमेरिकन ब्रांड. इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया? जुबिलेंट फूड वर्क्स. जुबिलेंट फूड वर्क्स का नाम सुना होगा आपने, या अगर नहीं सुना तो लेट मी हेल्प यू विद दिस. Domino's has introduced Jubilant Food Works. Jubilant has introduced Domino's to India. Similarly, they introduced Dunkin' Donuts, but failed massively. 77 outlets खोले थे पिछले 5 सालों में, पिछले 2 सालों में सिर्फ 15 रह गए. So इतना बड़ा लॉस क्यों हुआ? Because they failed to understand market, they failed to understand customer preferences, and they have a poor strategy. India is a market which, see, why I'm talking about Dunkin' Donuts? Dunkin' Donuts का जो प्राइम फोकस होता है, जो प्रीमियम प्रोडक्ट है, वो क्या है? ब्रेकफास्ट प्रोडक्ट्स. दे सेल डोनट्स, दे सेल शेक्स, दे सेल कॉफीज. इंडिया की ब्रेकफास्ट प्रेफरेंसेस बहुत अलग हैं. वी लव छोला भटूरा, वी लव आलू का पराठा, वी लव आलू कचौड़ी एज अ ब्रेकफास्ट, नॉट डोनट्स, राइट? दैट्स व्हाई दिस ब्रांड फेल्ड. करोड़ों लगाने के बाद लाखों भी नहीं कमा पाए ये ब्रांड. मगर ब्रांड्स लाइक हल्दीराम्स, अमरीक सुखदेव, हवेली बहुत बेसिक प्रोडक्ट बेच रहे हैं. स्ट्रेटेजी अच्छी है, पैकिंग करना आता है, कस्टमर्स की नीड को अंडरस्टैंड करना आता है, प्रॉफिट्स ही प्रॉफिट्स है. सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन डंकिन डोनट्स एंड हल्दीराम्स एंड हवेली. गाइस, फोकस ऑन दिस. बेसिक प्रोडक्ट के साथ अच्छी स्ट्रेटेजी रखोगे, प्रॉफिट्स कमा लोगे. जितना मर्जी अच्छा प्रोडक्ट हो, डंकिन डोनट्स वंडरफुल प्रोडक्ट, शेक्स जाके ट्राई कीजिए, वंडरफुल शेक्स, बट स्टिल इन लॉसेस. ओनली 15 आउटलेट लेफ्ट इन इंडिया. वो शायद खत्म हो जाए, you never know. So this is what designers and developers look like. Design thinking is something you have to see things in a different way. So आज मुझे डेवलपर, सिर्फ डेवलपर नहीं चाहिए, मुझे डेवलपर प्लस डिजाइन थिंकिंग एग्जीक्यूटिव चाहिए. सो चाहे आप कोई भी फील्ड में जाएं, आप लॉ में जाएं, चाहे आप बीटेक में जाएं, चाहे आप BBA में जाएं, डिजाइन थिंकिंग अप्रोच अच्छी रखिए. स्टार्ट सीइंग थिंग्स फ्रॉम ऑल द एंगल्स. Now let's talk about BTech avionics. Guys, Chandrayaan. What happened to Chandrayaan? Chandrayaan failed to land. Last 15 मिनट में Chandrayaan का ISRO से कनेक्ट टूट गया. वो जो टेक्निकल ग्लिच था Chandrayaan के अंदर, it is known as avionics. आज जो भी बच्चा एरोस्पेस इंजीनियरिंग करना चाहता है, या जिसका ड्रीम है DRDO, ISRO या HAL जैसी कंपनीज के साथ काम करने का, go for avionics. आप लोग एयर इंडिया की वेबसाइट पे जाइए, करियर्स पे जाके और चेक कीजिए, दे आर हायरिंग एवियोनिक्स इंजीनियर्स. सो एवियोनिक्स का मतलब क्या होता है? अमलगमेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन एविएशन, जिससे आप 2 चीजें ज्यादा सीखते हैं. आप एज अच्छा है, यू कैन वर्क एज अ एयर डिफेंस इंजीनियर, सैटेलाइट इंजीनियर, वेपन एंड एवियोनिक्स, आप उसमें काम कर सकते हैं. रेडार इंजीनियरिंग के अंदर आप काम कर सकते हैं. हैज अ लॉट ऑफ स्कोप. डू वी हैव क्वेश्चंस, सुमित? Yeah, we have questions. I think you can take it if you want, because somewhat is related to
what you actually just talked about. It is what does data scientist mean? Okay, data scientist means analyzing, doing analysis of data. Data scientist का मतलब ये है कि आप see, there is a lot of data around us. Facebook पे इतना है, Google के पास बहुत है, हर जगह अवेलेबल है. Right data मेरे मतलब का कौन सा है? I'll give you another example. आप, let's say if you are a boy, I'm assuming this is a hypothetical example I'm taking. You're a boy and you are in an age between 16 to 18. You have an inclination of running, so you run. You want to buy a shoes. आपने नेट पे सर्च किया शूज, आपने देखा बहुत एक्सपेंसिव, आपने छोड़ दिया. वो डेटा भी अवेलेबल है. और मैं I am a producer of sports shoes. Let's say I work for a company called Adidas. I have to reach out to you. I have a product which suffice your need. Along with it, I have some offers for you. So right time पे right data to right customer तक पहुंचना is a responsibility of a data scientist. Plus, it's not just about reaching to a right customer. It's about designing your product in a way what customers want. आज स्मार्ट टीवीज के अंदर द रिमोट हैज अ गूगल असिस्टेंट. किसी ने सोचा था कि रिमोट के अंदर भी गूगल असिस्टेंट है. यू जस्ट क्लिक इट, आप उसमें बोलिए ओपन यूट्यूब, द टीवी विल ओपन यूट्यूब ऐप. सो उस चीज को समझना, व्हाट कस्टमर इज आस्किंग फॉर, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, आज टेक्नोलॉजी कस्टमर्स को क्या क्या अवेलेबल करवा रही है. वी आर कनेक्टेड टू लॉट ऑफ डिवाइसेस. हमारे पास टाइम नहीं है. गूगल ने एक प्रोडक्ट बना दिया अलेक्सा, कमांड दीजिए लाइट ऑफ हो जाएगी, कमांड दीजिए लाइट ऑन हो जाएगी, कमांड दीजिए सॉन्ग्स चल जाएंगे, कमांड दीजिए न्यूज चल जाएगी. दिस इज व्हाट डिजाइनिंग अ प्रोडक्ट. सो राइट कस्टमर के पास क्या चीज जानी चाहिए, सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है, इकोनॉमी कैसे बिहेव कर रही है, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग क्या कह रही है, उस सबको समझना इस डेटा साइंटिस्ट का काम होता है, जो डेटा बिग डेटा और बिजनेस एनालिटिक्स कोर्सेज में आपको सीखने को मिलता है. Vaibhav, I'll suggest you one thing. We have been coming up with questions, and I will request all of the attendees. They keep on putting the questions in Q&A section, and I suggest Vaibhav take 10 more minutes to complete your presentation, and then I will Okay, take on the questions. Right. Thank you so much, Sumit. Okay, so another program I have. This is PharmD. This is a 6-year degree program, and especially for those who are in medicine, guys. जो भी PCB वाले बच्चे इस समय हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, दिस इज फॉर यू पीपल. इट हैज अ लॉट ऑफ डिमांड और 6 ईयर का डिग्री प्रोग्राम है. यू कैन वर्क विद फार्मास्यूटिकल कंपनीज, यू कैन बी अ मेडिकल राइटर. जैसे आपने देखा होगा प्रैक्टो एक ऐप है. सिमिलरली वी हैव लॉट ऑफ ऐप्स जो आपको मेडिसिन्स, आपको डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट्स और आपको क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स के बारे में बताती है. सो यू कैन राइट, यू कैन स्टार्ट राइटिंग एज अ ब्लॉगर, or you can work with companies like Practo, or you can work as work with the prominent pharmaceutical companies with this. And you can also practice. US के अंदर आज कोविड सिचुएशन में PharmD ग्रेजुएट बच्चे एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं. सो इट हैज अ लॉट ऑफ स्कोप, स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्रीज. Now let's talk about mechatronics. Those who are interested in mechanical engineering, guys, this is the wonderful career we have. Mechatronics means mechanicals and electronics. आज उसकी बच्चे की ज़्यादा डिमांड है जिसके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है, जिसने 2 या 3 स्पेशलाइजेशंस एक साथ पढ़ रखी हैं. सो अगर आप खाली इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे से बात करेंगे या खाली मैकेनिकल वाले बच्चे से बात करेंगे, और अगर आपके पास मेकाट्रॉनिक्स वाला बच्चा है, सो एज अ कॉर्पोरेट आई विल always inclined to hire a mechatronics guy because he has studied a lot of things. So robotics से लेकर telecommunication, controls and product engineering इसमें आप पढ़ते हैं. ये जो आप सामने एक पिक्चर देख रहे हैं, this is what defense is all about. आज हमारा जो डिफेंस है, आज हमारा मिलिट्री, जितना भी हमारे जो डिफेंस इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सब mechatronics पे बेस्ड हो गए हैं. राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट रोबोटिक्स हियर. और ऐसे ही डिवाइसेस आज लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन में बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं. लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन का मतलब है फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, जो वो किस तरह से लॉजिस्टिक्स में आपको चीजें प्रोवाइड करते हैं, जो उनके वेयर हाउसेस हैं, जो उनके डॉक यार्ड्स हैं, उन सब पे ऐसे ही डिवाइसेस आपको मिलेंगे. सो mechatronics has a lot of scope. You can work with prominent companies into this sector. Tesla has a lot of options for mechatronics students. So you can work with companies like Tesla, you can work with companies like Maruti or Hero has a different mechatronics wing जो ऐसे products design करते हैं.
Next, we have clinical research. कोरोना की वैक्सीन कब आएगी, सबसे बड़ा क्वेश्चन है. आज से 1 साल पहले तक सबसे बड़ा क्वेश्चन था बाहुबलियों का टप्पा ने क्यों मारा, बट आज सबसे बड़ा क्वेश्चन है कोरोना की वैक्सीन कब आएगी, राइट? सो दिस इज समथिंग व्हिच यू हैव टू फोकस ऑन, गाइस. Clinical research will allow you to assess potential treatment effects on human beings. Pharmacovigilance, scientific writing, वैक्सीन कैसे बनती है, उसका बॉडी में क्या उसका असर होता है, कैसे वो फ्लो करती है, बहुत स्कोप है. कोरोना के बाद सबसे ज्यादा स्कोप इस इंडस्ट्री में जो आया है वो क्लिनिकल रिसर्च में आया है. 114 वैक्सीन तैयार हो रही हैं डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ और डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ. 3 फाइनल स्टेज पे पहुंच चुकी हैं, राइट? सो लुक एट द स्कोप. क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल के साथ काम कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ काम कर सकते हैं, मेडिकल कॉलेजेस के साथ काम कर सकते हैं. लॉट ऑफ स्कोप. इसमें गवर्नमेंट ऑप्शंस भी हैं. सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. यू कैन वर्क विद अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल. नेक्स्ट इज मेन फ्रेम टेक्नोलॉजी. Guys, if you're interested in working with supercomputers, I'm reiterating it, supercomputers, then this is a wonderful course for you. This is a parent technology for cloud computing. 70% placements abroad में होती है because supercomputers जितने भी हैं वो जो prominent IT companies हैं उनके headquarters में placed होते हैं. So if you are working and upgrading supercomputers, mainframe technology 4-year degree program has a lot of scope. आप solution architect, product management, migration and legacy modernization specialist, administration and security specialist बन के काम कर सकते हैं. बहुत स्कोप है. सुपर कंप्यूटर्स जो हैं वो बल्क डेटा प्रोसेसिंग करते हैं, क्रिटिकल एप्लीकेशंस पे काम करते हैं. सो इट हैज अ लॉट ऑफ स्कोप, सो यू कैन गो फॉर इट. नेक्स्ट इज BSc microbiology. I'll explain this program with an example. Microbiology. Why Maggie got banned? Why Pepsi got banned? Why Cadbury got banned? इन सब के एग्जाम आंसर्स माइक्रोबायोलॉजी में आते हैं. मैगी के अंदर लेड क्वांटिटी ज्यादा मिली, राइट? सो दिस इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू माइक्रोबायोलॉजी. सो व्हेन we are working with pharmaceutical companies, when we are working with FMCG companies like food and beverage industries, so they have products and these products are they need continuous surveillance. सही से प्रोडक्शन हो रही है, अच्छा एनवायरनमेंट है, क्लीन एनवायरनमेंट है, हाइजीनिक एनवायरनमेंट है, इन सब के लिए माइक्रोबायोलॉजी यूज होती है. प्लस यू कैन डिजाइन न्यू प्रोडक्ट्स, right? So pharmaceutical and biotechnology industries में आप काम कर सकते हैं. You can even work for universities. You can teach in the universities. Pathology laboratories में आप काम कर सकते हैं. You can also do a lot of research related to microorganisms. So this is what microbiology is. This is a 3-year degree program, guys. BTech AI and ML, again a buzzword. I hope सबको ये पता है. From Siri to Alexa to Google Assistant, we have AI and ML programs with us. Software and Python. Python is a basic language, guys. If you are interested in coding, if you are interested in computers, AI, artificial intelligence and machine learning के area में जाना चाहते हो, so Python language की knowledge होना, उस पे command होना is must. सो आप स्पीच साइंटिस्ट बन सकते हैं, इमेज प्रोसेसिंग इंजीनियर बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं मशीन लर्निंग में. सो इट हैज अ लॉट ऑफ स्कोप. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या हुआ? व्हेन वी आर टॉकिंग Vaibhav, we can't hear you. Vaibhav, we can't hear you. I think you lost your audio. Yeah, actually, he was adding to it, like artificial intelligence and machine learning is the buzzword because we are going to talk about. Yeah, Vaibhav, when we can hear you now. Please continue. Your voice was lost. Yeah, Vaibhav. I guess. Yeah, we can hear you now. You can share your screen. So there's a lot of fluctuation in the internet. I'm really very sorry for that. Sorry for the inconvenience. So I was talking about occupational therapy. So OT includes helping children with disabilities to participate fully in school and social institutions, right? You can help them. You can work with healthcare sectors, hospitals,
and you can work with rehabilitation centers, you can work with mental health facilities, even you can practice privately. Along with it, you can work with children's clinic. So it has a lot of scope, guys. So this is a 3-year degree program. इसके बाद आप MSc भी कर सकते हैं, and this is a revamped version of physiotherapy. Next in the sheet we have oil and gas stream. Huge there. गैस कैसे एक्सट्रैक्ट होती है, कैसे उसको स्टोर किया जाता है, ऑयल कैसे एक्सट्रैक्ट होता है जिसको क्रूड ऑयल बोलते हैं, वो कैसे रिफाइन किया जाता है. रिलायंस, आई ऑलवेज रिलेट दिस प्रोग्राम विद रिलायंस. मुकेश अंबानी is the richest guy because of this domain. So refineries is the main domain of Reliance Industries. कृष्णा गोदावरी बेसिन जहाँ पे एक्सट्रैक्शन चलती है, अभी भी चल रही है, आप उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं. बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है. एनर्जी, गाइस, एनर्जी इज अ सेक्टर. अगर मैं इसमें ऑयल एंड गैस स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ, नॉट जस्ट अबाउट ऑयल एंड गैस, आई एम टॉकिंग अबाउट एनर्जी सेक्टर एज अ होल. इसमें हम सोलर एनर्जी के ऊपर भी काम कर सकते हैं. इसमें जो स्टडी होती है उससे आप कंपनीज विच आर इनटू थर्मल एंड न्यूक्लियर एनर्जी, आप उसमें भी काम कर सकते हैं. प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर किसी में भी काम कर सकते हैं, जिसमें प्रोग्राम्स आते हैं अप्लाइड पेट्रोलियम, गैस स्ट्रीम टर्बाइन एंड इंजीनियरिंग, रिफाइनिंग, केमिकल एंड रिफाइनिंग इंजीनियरिंग, सो विच हैज अ लॉट ऑफ स्कोप. सो आप प्रोडक्शन इंजीनियर बन सकते हैं, ड्रिलिंग इंजीनियर बन सकते हैं, वेल टेस्टिंग एनालिसिस बन सकते हैं, मड लॉजिंग इंजीनियरिंग बन सकते हैं. दिस इज अ प्रोग्राम विच फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव स्टार्टेड. UPS is known for energy related domain programs, and that's why companies like Niti Aayog has a lot of trust on us. So we do a lot of research, and I feel proud to share this. Only IITs and IIMs are working with Niti Aayog. Apart from IITs and IIMs, UPS is working with Niti Aayog. You can check MOU on Google, and this helps students to get practical exposure on their studies. BTech BSc फूड टेक्नोलॉजी, एग्जाम्पल देके समझाता हूँ. सफोला आज से लगभग 1 साल या 2 साल पहले तक इट वाज जस्ट अ रिफाइंड ऑयल, सनफ्लावर रिफाइंड ऑयल. टुडे वी हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिफाइंड ऑयल, सनफ्लावर रिफाइंड ऑयल विद ऑलिव ऑयल. सो एक प्रोडक्ट के अंदर कैसे एडवांसमेंट आती है, दिस इज व्हाट यू विल लर्न इन फूड टेक्नोलॉजी. आटा मैदा नूडल से मैगी आटा नूडल कैसे बना, कैसे सूपी नूडल बना, हाउ वी हैव मोर वेरिएंट्स in a product. This is what food technology is. अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं जिसमें फूड इंस्पेक्शन ऑफिसर बनना चाहते हैं, दिस इज द की फॉर दैट. सो आप एक्सपर्ट बन सकते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, फूड रिसर्चर, फूड क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर बन सकते हैं जो FMCG सेक्टर्स में, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में और गवर्नमेंट कंपनीज में काम करते हैं. फूड इंस्पेक्टर बन सकते हैं और एक्सपर्ट बन सकते हैं न्यूट्रिशन इंडस्ट्री में. आज आप अपना यूट्यूब ब्लॉगिंग कर सकते हैं, आप अपने ब्लॉग्स लिख सकते हैं फूड टेक्नोलॉजी के ऊपर. सो इट हैज अ लॉट ऑफ स्कोप बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर फिनिकी, लॉट ऑफ पीपल आर कंसर्न्ड अबाउट देयर डाइटरी हैबिट्स एंड देयर फूड. सो इट हैज अ लॉट ऑफ स्कोप. फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग, गाइस, फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग का मतलब ये नहीं है कि आप एक रेड कलर की बड़े से ट्रक में आग बुझाने जाएंगे. फायर सेफ्टी इंजीनियर और फायर फाइटर्स में बहुत डिफरेंस होता है. फायर सेफ्टी इंजीनियर्स का मतलब क्या होता है, यू विल वर्क विद प्रोमिनेंट कंपनीज इन देयर प्लांट्स, इन देयर कॉर्पोरेट हाउसेस, एंड यू विल इंश्योर दैट फायर एंड सेफ्टी नॉर्म्स आर फुलफिल्ड. राइट, फायर एंड सेफ्टी नॉर्म्स जितने भी हैं ये मैंडेटरी हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है गाइस. और सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्रोग्राम के बाद गेट का जो एग्जाम होता है, खासकर जो बच्चे साइंस वाले हैं जिनको पता है कि बीटेक के लिए पहले IIT JEE देना पड़ता है, उसके बाद अगर हमें PSUs में काम करना है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, तो GATE गेट का एग्जाम देना होता है. फायर एंड सेफ्टी करने के बाद देयर इज अ देयर इज अ रिजर्वेशन. आप फायर एंड सेफ्टी करने के बाद गेट का एग्जाम आप सुपरसीड कर सकते हैं. आई गेस वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. Yeah. So just allow me. Sonal ma'am. Sonal ma'am. Yeah, please. Vaibhav, the slew of courses options which your presentation has given is an eye opener, and we till some time back I thought I was up to date, but I think all of a sudden I feel I'm outdated. So ma'am, can we
Can we just go through only the courses names so that the student can see and they can get back to me through you if they any query? Do you have a list of that readily available? No. We will just change the slides. So Vaibhav, just you can change the slides. I'll just simply run through the presentation because I know because of paucity of time, because covering all the streams in even 1.5 hours is next to impossible because we have a lot of specializations to offer. So yeah, what we please go ahead. You can just take 1 or 2 minutes to go through the slides, and then we are taking questions. All right. So I am really very sorry to all the students because of the paucity of time. I won't be covering all the specializations. With this presentation, we can have the same kind of presentation somewhere next month as well. Or so as of now, this is cybersecurity, a 4-year degree program, or in BSc also there is a 3-year cybersecurity program available. And this is in demand. आप antiviruses और firewall कैसे बनाते हैं, ये चीजें इसमें आती हैं, and it has a lot of scope. Ethical hacking भी इसमें आता है. लीगल साइड ऑफ साइबर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इन डिमांड है. 6 ईयर का साइबर लॉ प्रोग्राम्स. IPR की फुल फॉर्म होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसमें कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स आते हैं. 6 साल का डिग्री प्रोग्राम है गाइस. पूरी इंडिया में कोई ऑफर नहीं कर रहा है. इवन NLUs, नेशनल लॉ स्कूल्स आर ऑफरिंग 1-year डिप्लोमा प्रोग्राम इन साइबर लॉ. सिक्योरिटी इंजीनियर्स गूगल के पास बहुत सारे हैं, बट साइबर लॉयर नहीं है, बिकॉज आज सबसे बड़ा क्राइम, सबसे बड़ा थ्रेट साइबर के थ्रू है. सो साइबर लॉयर बहुत इन डिमांड प्रोग्राम है गाइस. अगर 6 साल आपने अपनी क्रूशियल एजुकेशन के आपने साइबर लॉ को दे दिए, ट्रस्ट मी, नेक्स्ट 60 years डाउन द लाइन you really don't have to look back, and sky is the limit. You will earn a lot of money and it has a lot of demand. You can work with prominent IT companies in their legal cells, and you can work with technical teams in IT sector as well. So this is a beautiful course. You should look forward to 6-year degree program, LLB in cyber law, and only for science students, especially for science students. PCM, इसमें हमें PC aggregate 50% चाहिए होता है and more. Then we have BSc Optometry. अगर आप vision से related कुछ सीखना चाहते हैं, Lenskart.com या फिर जो lenses बनते हैं, Bausch & Lombs, Alcon जैसी कंपनीज में काम करना चाहते हैं, it has a lot of scope. इंडिया और इंडिया से बाहर बहुत स्कोप है, स्पेशली ऑनलाइन एजुकेशन के साथ इसका स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बढ़ने वाला है. राइट. So BBA Hospital and Healthcare, guys. So this is a management side of hospital and healthcare. So अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है या आप टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं परस्यू करना चाहते आगे, सो आप BBA in Hospital and Healthcare कर सकते हैं. मैक्स चेन ऑफ हॉस्पिटल्स, मेदांता चेन ऑफ हॉस्पिटल्स, अपोलो चेन ऑफ हॉस्पिटल्स, और जितनी भी जो मेडिकल डोमेन के अंदर फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उनको कैसे मैनेज करना है, कैसे उनका रेवेन्यू जनरेट करना है, कैसे लॉसेस एंड आप रेवेन्यूज की आप डीलिंग करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर. यू कैन वर्क विद हॉस्पिटल्स इनटू द मैनेजमेंट फील्ड, मैनेजमेंट साइड ऑफ इट. योगा एंड न्यूरोपैथी सेंटर्स बहुत बहुत प्रोमिनेंट है आज की डेट में. योगा इज लाइक ग्रोइंग लाइक एनीथिंग. कल्ट फिट आपने नाम सुना होगा, एनी टाइम फिटनेस आपने नाम सुना होगा, फिटनेस फर्स्ट आपने कंपनी का नाम सुना होगा. दे आर इनटू जिमिंग एंड योगा सेंटर्स एंड दे नीड पीपल लाइक यू टू मैनेज देयर बिजनेस. सो गवर्नमेंट एजेंसीज में काम कर सकते हो, मेडिकल टूरिज्म, फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड ऑल. ओके, सो दिस इज अगेन द बेस्ट वन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. दिस हम इसको ऑटोमेशन ऑफ थिंग्स बोलते हैं. MG हेक्टर जो ये गाड़ी है, इट हैज अ बैजिंग कॉल्ड इंटरनेट इनसाइड. इसका मतलब क्या है? वो यही है कि इट इज अ वाईफाई एनेबल्ड कार and it is automated. I mean, we have more than 3,000 features in this car which works on your command. आप बोलेंगे सनरूफ खुल जाएगी, आप बोलेंगे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी. अपने घर से, अपने मोबाइल से आप इस गाड़ी का टेम्परेचर सेट कर सकते हैं. दिस इज व्हाट इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज. इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड ट्रस्ट मी गाइस, इन इंडिया इट हैज मोर स्कोप देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. AI से ज्यादा डिमांड इंडिया में आज IoT की है. सो इसके बारे में प्लीज सोचिएगा. 4 साल का प्रोग्राम होता है, ह्यूज करियर ऑप्शन. Vaibhav, I'll disrupt your presentation. I think since we've breached our time limit, what we can do, Sumit, is if that's fine by you, is private window, take a slew of subjects which has been covered during this presentation, and right, ma'am, separately circulate it amongst our students, and
and parents. Right. We are almost done with the presentation. So it's about PS, which Sumit can explain. Yeah, and we are almost done with it. Based on that, we'll bother you more. We'll solicit questions from our students based on their field of interest, and yes, market to you. I think that will be a more constructive way of doing it. Absolutely, ma'am. You can reach out to me on my email ID, and even Vaibhav is sharing his contact and his email ID. You can consolidate all the. You can tell any one of them to consolidate all the questions, and we will be getting back to you on the same by email. We can do that. Absolutely, and once we circulate the list of subjects which students have as their options, apart from the regular ones, and we'll definitely come back to you. Rather, I see a few of the subjects where we might call for people who specialized of some departmental heads, to give us an in-depth knowledge of the subjects which are at stake in your university, so the students better understand. So that is something we can look for at a later stage. Right. But Vaibhav and Sumit, it's been a pleasure, and we really thank you from the bottom of our heart. Yeah, thank you so much for your time. We are also thankful to entire DCM group of schools, and especially to you, ma'am, for entire effort which you have done. And thank you, Mr. Vaibhav, for taking time. Team effort. I want Thanks for your kind words. My team sitting at head office. So thank you so much for my entire team of the DCM group of schools who yes, ma'am, been successful. Thank you so much, Sumit. And we both, Sumit and I, are just a call away. Whenever you need any help or you want more clarification on the programs or any other career coaching for the students, we are available. Absolutely, we'll get back to you. We'll reconnect. Yeah, thank you so much. Stay safe, stay healthy, all of you. Thank you so much. Thank you. Bye bye.